is getting my voice, please? Everyone is Yes, ma'am. getting my voice. Okay. Yes, ma'am. Okay. Good morning. Okay, girls. So I would start my lecture today, and according to schedule, today it's a speaking class. But as we hadn't any class yesterday, so I would go for the writing. Okay, girls. So how many there are? 10 students. Okay. So what we are going to learn today? Last, in our last writing class, we have completed our parts of speech. We have completed that, and the last class we have completed our parts of speech, and now today, from today we will start tenses. So what are tenses actually? Tenses are the basic, I must say, basic thing of or in English language. Just for a minute, please wait. Charger connect कर दूँ. Okay, so tenses are the basic thing in English language. How tenses perform their role? Actually, if you know tenses, then it is easy for you to make the sentences. They are two different things, tenses and sentences. Fine. So if you know the use of tenses, it is very easy for you to make the sentences, and it is very easy for you to know how to speak English. Just like that, you have seen that there, when we are going to speak another language, so it is very difficult for us to know what to speak, like what we would use for male, what we use for female, and how we use future thing. Like if I am going to say anything in the future, how would I say that? If I'm going to mention the past, how I mention the past. So these are the different things tenses tells us, that how we use it in our sentences or language. The meaning of tenses is in Urdu is zamana. जमाना जो है ना, उसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं. अब अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बताऊं टेंस को, तो टेंस बेसिकली कहते हैं जमाने को. टेंसेस अगर आपको आए तो आपको पता चलता है कि आपने क्या चीज प्रेजेंट में है, क्या चीज पास्ट में है, एंड क्या चीज फ्यूचर में है. ये तीन चीजें होती हैं. टेंसेस आपको बताते हैं कि क्या चीज प्रेजेंट में है, क्या चीज पास्ट में है, और क्या चीज फ्यूचर में है. But tenses get through. If you know the tenses, then you will get the idea. What's that? Okay. Yes. If you know tenses, then you'll get the idea के सूरत हाल क्या है. Now, there are 12 tenses in English. There are 12. 12 tenses है English में. ये 12 tenses करते क्या हैं? ये 12 tenses आपको help out करते हैं to speak English. To like speak in a way कि आप differentiate कर सके. अगर मैंने past की कोई बात करनी है तो अब past वाला tense use करूंगी, present की बात करनी है present tense use करूंगी, and when it comes to future I will use future tense. But how would I know कि इसमें से present कौन सा, past कौन सा, future कौन सा? ये चीज. और दूसरा कि मैं इसे यूज कैसे करूंगी. Like मुझे कैसे पता चले कि मैंने present perfect कब यूज करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, बिकॉज है तो दोनों प्रेजेंट. सो ये चीजें जो है बेसिकली इफ यू नो द टेंसेस यू कैन नो एनीथिंग. मतलब टेंसेस ही बेसिक होती हैं. सो चलते हैं टेंसेस की तरफ. हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, हमारा चूंकि 3 मंथ कोर्स है तो टेंसेस मैं वो स्लो पेस में लेके जाऊंगी. I want you to learn the tenses in a very slow pace. ऐसा भी नहीं है कि मतलब सारी जिंदगी इसी में बिता देंगे. The point is that I would cover the tenses in June, like today is 10th of June, and in the middle till middle of July.
till the middle of July we will complete all the 12 tenses. Tenses तो मैं फिर ऐसा भी होता है कि एक दिन में सारे करवा दूँ, ऐसा भी है कि पर डे के हिसाब से टेंस 12 दिन में खत्म करवा दूँ. The point is that I want to make this thing clear for you, and I need your effort because tenses कब आपके लिए useful हो सकते हैं जब आप tense सीखें और next class में आप उस tense को बताएं भी कि यार that is how I'm going to use this tense. That is what you will show your effort in its usage. आपको tenses note down करके उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है until unless कि आप उसको use करें. तो tenses को आपने use करना है अपने डेली डे टू डे, मतलब जो हमारा ये स्पीकिंग क्लास होगी उसमें, और whether it's in your in your personal life. So okay, we will go for the first tense, and okay, there are 12 tenses. Four belong to present, 4 past, and 4 future. Present, past, and future. Fine. So we will start from the present tense, a simple present tense. Okay, I'm not going to start from the past tense. I will start from the present tense. First, I will do the present tense. Then I will go for the past tenses, and at the end we will go for future. I'm really sorry, I'm yawning again and again. Okay, guys. So, yes, I will start today from the present indefinite, or you may say it a simple present tense. We will start from the present indefinite, or you may say it a simple present tense. If you have any query or if you have any question, please put it in a chat box. I will look at it and then I will answer your questions. Fine. So I'm again saying you, if you have any query, any question, please put it in a chat box. If you're not going to learn, like if you will not push yourself, how would you learn that? And I'm telling you very best thing is that कि आप जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, it means कि आप उसको अपने माइंड में absorb कर रहे होते हैं, and that is actually the long lasting learning. Otherwise if you say कि ठीक है बस समझ आ गई है and then आप उसे apply भी नहीं कर रहे हैं, आप उसमें अपने effort भी show नहीं कर रहे, that is actually the hard thing. So I have told you there are 12 tenses. 12 means it's enough for you to know at this time. Till at this time, it is enough to know for you that there are 12 tenses. That's it. You don't need to go for their names, 12 names. You don't need to go for that. Just you should know there are 12 tenses, and we are picking up the one, and we are going to do one today. Present indefinite tense, or you can say it the present simple tense. So what is that? Second. Yes, I'm not having any question regarding anything. Fine, I will go for the more things. Yes, what is present indefinite? हम present indefinite क्यों use करते हैं? Why we use present indefinite? There are different uses of present indefinite, and the point is that the question is that when I have to use present indefinite tense, present indefinite जो होता है वो use होता है different situations में. Like I will tell you the different situations in present indefinite, and then we will go further. First, we use simple present tense or present indefinite for expressing our thoughts and feelings. पहला क्या है? Thoughts and feelings. For expressing thoughts and feelings. For expressing thoughts and feelings. सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्यों यूज करते हैं? अगर मैंने अपनी कोई थॉट या मैंने अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी है,
कि मैं ये सोच रही हूँ, या मेरी ये सोच है, या मैं ऐसा फील कर रही हूँ, या मैं ऐसा फील करती हूँ। जो नॉर्मली देखो एक थॉट होती है, हमारी थॉट हमारी कुछ टाइम तक के लिए कांस्टेंट रहती है. इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एन ओपिनियन फॉर सम पर्सन, तो मैं उसे यही कहूंगी कि आई थॉट अबाउट यू लाइक यू आर वेरी गुड मैन. सो ये मेरी थॉट है उसके बारे में. And when it comes to feeling, I feel that you are not good for me. That's how I feel about it. So the point is that thoughts and feelings एक टाइम के लिए कांस्टेंट रहती हैं. तो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को बताएं. अब मैं प्रेजेंट मूवमेंट की थॉट नहीं कह रही कि मैं इस टाइम आपके लिए फील कर रही हूँ, नहीं. जो नॉर्मली मैं बार बार एक थॉट मेरी रहे या मेरी एक फीलिंग बार बार रहे, तो वो नॉर्मली एक्सप्रेस करने के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करूंगी. मैं कहती हूँ मेरी थॉट है कि आई हैव दिस थॉट अबाउट यू, आई हैव दिस फीलिंग अबाउट यू, सो that I would express in present indefinite. Next thing, we use present indefinite for states, things staying the same, facts, simple facts के लिए. वो चीजें जो कभी बदल ही नहीं सकती, उनको इंग्लिश में बताने के लिए. अब जैसे उर्दू में तो मैं कह रही हूँ सूरज जो है ना वो मशरिक से निकलता है, ये कभी नहीं बदल सकता, हमेशा ऐसा ही होगा. तो ये कैसे, ये फैक्ट है, ये हकीकत है. खुदा एक है, ये हकीकत है. और कुछ ऐसी हकीकतें जो कि जो चेंज नहीं हो सकती, दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर फैक्ट्स. फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए आई यूज, और लाइक वी यूज इन इंग्लिश द प्रेजेंट इंडेफिनिट. लाइक फॉर एग्जांपल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. कभी भी मगरिब से तो नहीं निकलता, और ना ही कोई टाइम पीरियड. लाइक ये फैक्ट है, ये तो ऐसा ही होता है. एक काम है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक मतलब ये हकीकत है. तो हकीकत को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट यूज करूँ, और वो हकीकत जो अज़ल से है अब तक रहेगी. इफ आई से अल्लाह इज वन, दैट इज ट्रूथ, दैट इज फैक्ट. सो लाइक एनीथिंग दैट इज ट्रूथ, दैट इज फैक्ट, वी एक्सप्रेस दैट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. और ये तो बहुत बड़ी बड़ी एक मैंने एग्जांपल्स दिए हैं. सिंपल इज दैट के वो मतलब अगर मैं कहूँ कि शाजिया लिव्स नियर टू माय हाउस, शाजिया मेरे घर के पास रहती है. शाजिया कब से रह रही है, अभी भी रहती है, दैट इज ट्रूथ. एंड she doesn't have any plan to change his house or anything or her house. तो वो मेरे घर के पास रहती है, और ये फैक्ट है. कोई मुझसे पूछे शाजिया कहाँ रहती है, शाजिया lives near to my house. So that is actually the fact. वो मेरे घर के पास रहती है. She is my sister. वो मेरी बहन है. That is universal truth. She is my sister. वो मेरी बहन है. तो इस तरह के फैक्ट्स को बताने के लिए भी यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. थर्ड इज रिपीटेड एक्शंस. एक एक्शन जो आप बार बार रिपीट करते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. फॉर एग्जांपल, आई गो टू ऑफिस, आई work there, I use this transport, I have my lunch at 1 p.m. So these are the things that are habitual in my life, the habits. Like I love to read a book. So ये मेरी हैबिट्स हैं. अपनी हैबिट्स को बताने के लिए, और वो चीज जो आप रिपीटेडली करते हो, वो भी जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे काउंट करते हैं. तो अपनी कोई भी हैबिट या ऐसा काम जो आप रिपीट, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों कहते हैं कि भैया ऐसे लिखे माय स्कूल, सो व्हाट दे राइट इज आई रीड इन दैट स्कूल, और आई प्ले विद उसामा, एंड we have a break at 12:30 p.m. or no, in the school's break is in, yes, break is at 11:30, I guess. So repeated actions, the actions which occur in your daily life again and again,
those actions are actually we express in present indefinite, we use present indefinite. Next, in phrase like I promise, I agree, जब हम कोई promise करते हैं किसी से, then we use present indefinite. For example, अगर मैंने किसी से वादा करना है, to you, I'm using present indefinite. I promise you that we will meet again. That is present indefinite. So जब कोई प्रॉमिस करना हो या आप किसी बात पे अग्री करें किसी के साथ, यस आई एग्री विद यू। देखो, अगर अगर आप डेप्थ में जाओगे ना, तो आप देखोगी कान ऊपर से पकड़े नीचे से पकड़े, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, वो कैसे, वो ऐसे, प्रॉमिस जो है मैं प्रॉमिस अगेन करूंगी, प्रॉमिस बार बार करती हूँ, रिपीटेड एक्शन है। और फ्रेजेस लाइक प्रॉमिस तब भी इस वजह से सेम है, दोनों प्रेजेंट डेफिनेट यूज करूँ। आई अग्री इन फ्रेजेस में भी यूज होता है जब आप किसी से सहमत होते हो, यदि आप किसी अग्री कर रहे हैं, तो आप फैक्ट्स के साथ ही जो आपको लगता है, आपकी फीलिंग होती है, जो आपकी थॉट होती है, जो आपके फैक्ट्स होते हैं, आप तभी अग्री करेंगे ना, ऐसे तो आप अग्री नहीं करेंगे। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि जब आपने थॉट्स और फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो प्रेजेंट डेफिनेट है। फिर मैंने अगेन कहा कि जब आप किसी से अग्री करते हो तब भी आप प्रेजेंट डेफिनेट। तो आपकी थॉट जो होगी, आपकी जो फीलिंग होगी, और फिर जो आप बार बार रिपीटेडली आप किसी फैक्ट को मानते होंगे, आप उसी पे तो अग्री करेंगे। तो इसमें तो मतलब कहने का मकसद यह है कि ओवरऑल ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं सब आपस में अटैच्ड हैं। बस आपने ये थोड़ा अवेयर रहना है कि आपने इसे यूज कब करना है। जो बात याद रखने की वो ये है कि इससे सबसे पहले आप यूज करेंगी, रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए यूज होता है, हैबिट्स को बताने के लिए। दूसरा ये कि अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को बताने के लिए यूज होता है। थॉट्स और फीलिंग्स और रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं आप। थॉट्स एंड फीलिंग्स और अपनी हैबिचुअल जो आपकी हैबिट्स होती हैं या फिर आपके रिपीटेड एक्शंस होते हैं, अपनी पसंद नापसंद उन्हें बताने के लिए आप इसे यूज करती हैं। सिंपल, थॉट्स और फीलिंग्स वही होती है ना, पसंद नापसंद। For example, there is a paragraph here that yes, I like this supermarket. I think it's very nice. Yes, my husband thinks so too. We always shop here. We come here every week. We live quite near, so it doesn't take long to get here or here. So अपनी thoughts and feelings को express करने के लिए, अपने repeated actions बताने के लिए आप present indefinite को use करते हैं। आप प्रेजेंट डेफिनेट को यूज करते हैं अपनी जो है ना वो थॉट एंड फीलिंग्स बताने के लिए, रिपीटेड एक्शंस। बाकी जो बाकी मैंने बातें बताई है, प्रॉमिस और ये वो, दे आर कनेक्टेड विद दिस थिंग, फैक्ट्स वगैरह, ये तो सारा उसी के साथ ही कनेक्टेड है। जो बेसिक है वो दो चीजें हैं, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और अपनी हैबिट्स को, और अपनी वो जो एक है रिपीटेड एक्शंस, हैबिट्स एक ही चीज होती है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप जो है वो यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ये है इसका, अगर मैं इसे डायरेक्ट इंग्लिश में, ओके, देयर इज एन अदर वे टू। फॉर एग्जांपल, जिस वे से हमें भी टीचर ने सिखाया है, लाइक आई started to learn tenses when I was in grade 6. Yes, so my teachers were, I am very lucky in this sense that whenever in the past I had a very excellent teachers of English. I'm really thankful to them. So what they used to do, अच्छा वो ऐसे करते थे, जो मेल भी थे फीमेल्स भी थी, सिवाय एक के, और मैं उन एक की सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बाकी सब क्या करते थे, they used to say okay, आपने भी ऐसे ही, मे बी आई डोंट नो हाउ डिड यू लर्न, कि ता है, ती है, ते हैं, जिन जुमलों के आखिर में आता है ता है, ती हैं, ते हैं,